Good morning to all. Good morning, sir. Good morning, Good sir. morning, Good sir. morning, Morning, sir. sir. So I hope you are referring the contents on the provided link. Yesterday itself, I have uploaded the lecture and the notes. सर आपने कौन सा लिंक भेजा है? मैंने तो कोई नहीं भेजा, वो एक ही है बस LMS पे, उसी पे अपडेट होता है। अच्छा, उसी पे मैंने जो इंस्टॉल में जो फोल्डर्स, दो फोल्डर्स बने हैं, एक फोल्डर है लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स का और दूसरा है नोट्स का। तो डेली अपडेट हो जाता है, लेक्चर जब भी होता है उसके आधे घंटे के अंदर वो अपडेट हो जाता है। और ये तो मेरा पार्ट था, बाकी LMS पे ऑलरेडी सारी चीजें हैं वेबसाइट पे, प्री रिकॉर्डेड चीजें भी सारी अवेलेबल है। आप दोनों चीज रेफर कर सकते हैं, दोनों करना भी चाहिए आपको रेफर। आपका नेम गिवन नीचे लिखा हुआ कोई उस लिंक्स के नीचे? LMS पे एक लिंक है कि लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स एंड PPT _ XPS फाइल फॉर MEE ग्रुप। So MEE group, you are mechanical engineering group, so that link is specifically for you. इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, it is open to all, but हमारी क्लास में जो चल रहा है वो सारा चीज वहाँ पे है। ओके सर। ठीक है। So we will continue with our half wave rectifier topic. Okay, so can you see the board, virtual board? Okay. Okay, so yesterday we have started the next application, that is half wave rectifier. So this is the half wave rectifier using transformer. This is half wave rectifier using transformer. You can directly provide AC voltage at this point also. Okay. But the idea is that we will be receiving this V in from our household supply, and that is 230 volt, 50 hertz. So a very large value. So we have to use a transformer. Okay. If we have function generator, if you have seen the first experiment of lab, so description of function generator is given over there. So if you have function generator, then you don't need to use this transformer. You can directly give the supply here. But if household, if you are deriving this AC supply from your household, then you need to have a proper transformer. So in our lab, we used to have a step down transformer. So this output voltage, the voltage at the secondary winding is around 6 volt and 12 volt. We have two transformers. So 6 volt or 12 volt, we can have any of the two values. So this value of this VS, 6 or 12 in our electronics lab. Okay, so from 230 to 6 volt or 12 volt, step down. So this was the waveform if the diode is ideal. If this is your Vin, a sinusoidal wave with time period T. So Vin will be exactly equal to Vout. Vin will be exactly equal to Vout for
t less than t by 2 greater than equal to 0. So for the first half, for the positive half, V in and this V out are exactly equal. And if this maximum value is Vm, the maximum value of V out will be also equal to Vm. In the negative half, the diode will be in off state. So broken circuit, no current will flow, V naught will be 0. So 0 volt. Then again, the positive half, V out will be equal to V in, then 0. Likewise. Current can be simply calculated by applying Ohm's law. So current I will also be a sinusoidal wave. Okay. And simple by Ohm's law, I will be equal to V naught by RL. So the waveform will be same, just the magnitude at each and every point will be scaled by the factor 1 by RL. So this point, the stop point will be Vm by RL. And yesterday I have not discussed this VD, so voltage drop across this diode. So when the positive cycle will arrive, this diode will be in on state. A simple wire, we use a simple wire to replace this diode, and the voltage drop across this wire is 0. So VD is 0. And during the negative cycle, the diode will behave like a open circuit. Open circuit means a resistance of a infinite value. So it will drop all the voltage across it. Okay, it will not let any of the voltage to pass to drop across this resistance RL. So it will drop all the voltage across it. So VD will be exactly equal to Vn. So as it is, I have drawn VD is exactly equal to Vn. And this point, if this point is minus Vm, this point is also minus Vm. Okay, so this is known as peak inverse voltage. This point is known as PIV, short form is PIV, and it is known as peak inverse voltage. Maximum voltage drop across the diode when it is in reverse bias conditions. That is minus Vm. And in this case, it will be Vm. Magnitude is Vm. Nilesh, do you have any doubt? You have raised your hand. Yes, Nilab. So this is for ideal case, right? Yes, ideal case. Okay, still you have some doubt. Yes, Ayush. सर लाइक वीडी आपने ग्राफ पे क्या बताया था, दोबारा से एक्सप्लेन करना है पूरी। VD. Okay. यहाँ पे आपने नीचे बताया था जहाँ पे माइनस वी है, यस this point is this is the maximum magnitude. Okay, this is the voltage drop across the diode, and this will be the maximum. If this is minus Vm, this will be also minus Vm. So a magnitude, I am talking about magnitude, not sign. Okay. ओके So this will be the maximum magnitude, maximum voltage drop across this diode. So we called it as PIV, peak inverse voltage. Inverse means inverse itself has incorporated the minus sign. So peak means maximum, inverse means in negative direction, and voltage. So what is the magnitude of this PIV? So that is simply Vm. Minus, we don't put minus because we have already put inverse in the terminology. सर हमने इस ग्राफ में जैसे आपने ये आगे स्ट्रेट लाइन दिखाई है, फिर नीचे की तरफ है, तो ये किस चीज के लिए वाला? ये voltage drop across this diode, we are talking about voltage drop across this diode. So when this positive cycle will appear, this diode will be short circuit. This is the ideal diode. So voltage drop across a short circuit is 0. Okay, so voltage VD will be 0. Simple. So next, this is for reverse bias. This is for reverse bias. So you can add this two value. If you apply KVL in this loop, so Vs, this Vs will be equal to Vd plus Vr, or you can say V naught. Okay. So in the first case, when positive cycle appear, Vd is 0. So Vs is equal to V naught.
Okay, so V naught means you should write V naught in left hand side. So V naught is equal to Vs. So it is exactly replicating the input voltage V naught. And in the second case, again you can write the same equation, Vs is equal to Vd plus V naught. So in the second case, V naught is 0 because current is not flowing. So obviously Vd will be equal to Vs. So exactly it is following this input voltage. So V naught is initial voltage, like which V naught is is output voltage. This voltage drop across this resistor. We are measuring output voltage between this 2 point. okay. This is point A and this is point B. So V naught will be equal to VR itself. Whatever is the voltage drop across this resistance, that will be the value of V naught. Okay. Okay, whenever you will perform the experiment, you will put voltage analyzer at point A and point B will be connected to ground. And sir, I have a doubt in yesterday that you were explaining some examples of like questions. There were not 2, 3. So I was having doubt there also. So is it related to half wave rectifier? So first let me finish this. We are already in the flow. So Yes, sir. okay, so in the last 5 to 10 minutes, then we will move. Before starting new topic, I will take your doubt. Okay, sir. Okay, अभी flow थोड़ा सा disturb हो जाएगा. Yeah, okay. sir. Mayank. Yes, Mayank. सर जब AC टू थोड़ा DC हो चुका होगा, जब हम अगर रजिस्टर के अक्रॉस जब हम वोल्टेज देखें तो V नॉट के लिए जो PIV 0 नहीं होगा? PIV in which case रजिस्टर के अक्रॉस? नो, ये डायोड के अक्रॉस देखते हैं, रजिस्टर के अक्रॉस नहीं देखते. ये PIV डायोड के लिए डिफाइंड है. अच्छा, रजिस्टर के अक्रॉस. नहीं, रजिस्टर के लिए डिफाइंड नहीं है. सर क्योंकि उसके लिए तो शायद रिवर्स वोल्टेज होगा ही नहीं ना. हाँ, उसके लिए तो होगा ही नहीं, 0 आ रहा है ना उसके लिए. यस सर. ये डायोड के लिए PIV इज डिफाइंड फॉर डायोड. ओके. तो अभी हमने ब्रेकडाउन वोल्टेज नहीं पढ़ा है, तो उसको ब्रेकडाउन से कम रखना होता है. तो दिस इज फॉर, this is defined for diode. So diode specification. Oh, I missed one topic, specification sheet. Okay, I will cover it in the just 2-minute topic. Few points are there. What is mentioned whenever you purchase any diode or whenever you refer any diode. So some specifications are given, 5 to 6 points. Okay, that I have missed. So I will be covering it on Friday. तो वहां पे PIV की वैल्यू होती है, और इसको हम ब्रेकडाउन वोल्टेज जब पढ़ेंगे तो एक बार वापस इसको रिकैप करेंगे कि क्या होना चाहिए इसकी वैल्यू ब्रेकडाउन से ज्यादा या कम. ओके, एनी मोर डाउट? Okay, so that was all for ideal diode. Okay, all the waveforms I have drawn, all the waveforms. So V in means this Vs. This V in is referring to Vs, voltage drop across this secondary winding. Vs. Ultimately, you have to refer this Vs, and this will be your V out. This will be V out. This will be current waveform, and this will be the waveform for diode, voltage drop across diode. So all 4 I have incorporated in a single vertical line. Okay, and when your diode is real, so we have already discussed it in great detail that till Vk, Vin is increasing from 0 volt and it will rise gradually, and till Vk your diode will be in off state, where Vk is the knee voltage of your diode. So since it is in off state, so it will be considered as an open circuit, and open circuit means again voltage V out will be 0. And when it reaches to Vk, your diode will be in on state. After that, we will replace it with a voltage source like this, plus minus Vk. Okay, and this Vs will be replaced by, now in place of Vd, I will write this minus Vk. So Vs, V naught is Vs minus Vk. So yesterday I have yes, Chirag. Sir, actually, I have a doubt. For the half-wave rectifier, if you draw the graph of it, it will only show the top portion of the graph, top portion of x-axis, right? Yes. Not the bottom portion of No, x-axis. yes, correct. Rectification, rectifying means it is
we want to convert AC into DC. DC is something a line. We know plus 2 volt, plus 3 volt. So we need to first rectify this negative half. Then we have only positive half. Then we will perform some more steps, and then we will convert it to a straight line like this. So it will only show the graph above the x-axis. Yes, exactly. And for the full wave, it will just flip the bottom portion to the top portion of the x-axis. We will discuss the full wave in great Just only detail. I have that doubt. Okay. Thank you. फुल वेव भी आएगा, अभी दो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें, ठीक है. So this thing I was talking about, the real diode. So this also yesterday we have discussed in great detail. So now when Vin is greater than Vk, this diode will behave like this, and diode will conduct, and we will have output voltage. The waveform will be same, except that the magnitude will be reduced by Vk. So if this is Vm again, this top value will be Vm minus Vk, like this. Again 0, this Vn minus Vk, like this. Okay, so this was all about the behavior of the diode. Now we will define some parameters, and we will derive their mathematical formula. Okay, like average value, power, like this, efficiency. So first thing, okay, so this is your Vin. Now this is our input voltage, and if we have provided this to our half wave rectifier, considering ideal diode, this will be our output voltage from between 0 to t by 2. Output is there, t by 2 to t, 0, t2, this is 2t, sorry, 3t by 2. So this is called pulsating DC. Okay, pulsating because it is not a constant value, it is changing, it is a kind of pulse. So we called it as a pulsating DC. This term is also used for this kind of output. Okay, so now I assume that my input voltage is given by the formula Vm sine omega t. So this is a sine wave with maximum value Vm. So I can write it as Vm sine omega t. Okay, where omega is 2 pi f. F is the frequency, and frequency is 1 upon t. If t is the time period, okay, t is time period. Yes, Tushar. Yes, Tushar, do you have any doubt? यस सर. सर रियल डायोड में हम लोगों का वीडी का ग्राफ कैसे बनेगा? वीडी का ग्राफ, ओके सर रियल में. एक मिनट, लेट मी इरेज दिस थिंग. नेगेटिव के लिए तो वो इन दिस नेगेटिव साइकिल, दिस इट इज कंसिडर्ड एज कंप्लीटली इन ऑफ स्टेट. यस सर, ओपन सर्किट वो तो ओपन सर्किट एज इट इज. पॉजिटिव में मैं बता देता हूँ इरेज करके. So so when this is the case when your diode is off, okay, so I am talking about VD. So whenever your diode is off, it will simply follow the input voltage. Okay, whenever your diode is off, it will simply follow the input voltage. So in this, I am getting V out equal to 0. This means that this diode is dropping all the voltage across itself. Means it should follow the input voltage. So something like this. And after this, diode is in on state, and it is having a constant voltage drop across it, that is Vk. So a straight line. Again, it is in off state, so it will follow input voltage. Now input is decreasing like this. Okay, so this is the point. Okay, input is decreasing, and then it is completely in off state for the entire negative cycle. So like this. So this is Vk. First it is increasing from 0 because it is following V in. Then at point Vk, it gets on. Then there is a constant voltage drop Vk across it. So a straight line Vk. Then again V in is less than this Vk. So diode gets off again. So again it will follow input voltage. So this is the positive half cycle.
This was the positive half cycle, and from this point onward we have negative half cycle. So in this region, diode will be always off. No need to give any extra explanation for this. So it will simply follow this like this. So this will be minus Vm. Okay, again it will slightly rise up to Vk, then it will get constant, then it will again decrease. So it is something like this. So this experiment, when you will do this experiment of clipper or half wave rectifier, what you can do, you can have one voltage analyzer at this point, Vd, okay, across this Vd, and you can plot this. So you will observe that this kind of curve is coming. Okay, clear? ये पॉजिटिव जो है, जो जीरो ड्रॉप दिखा रहा है, जीरो ड्रॉप की जगह 0.7 हो जाएगा बस ये छोटे से पोर्शन को छोड़ के. Okay, so coming back to the derivation, so I was here. Okay, Chirag, अगर if your doubt is solved, then please lower your hand. Okay, confusion होता है फिर. Yes, Chirag. Chirag, Anshit. Yes, Anshit. सर आपने जो वी इनपुट और आउटपुट का जो ग्राफ बनाया था उसमें आपने एम्पलीट्यूड सेम दिया था उसे. V इनपुट आइडियल के केस में सेम होगा, पर वो स्टेप डाउन जो ट्रांसफार्मर है वो वोल्टेज को स्टेप डाउन नहीं कर देगा, लो नहीं कर देगा. ये इनपुट इस स्टेप डाउन सेकेंडरी कॉइल का ही मैंने लिया है. ओके. Vs लिखा है ना, Vs इज इक्वल Vs, यू कंसीडर Vs एज V इन. ओके. तो सेकेंडरी का ही लिया है. ठीक है, आप एक और एक्सिस यहाँ पे बना लो, ऊपर एक और बना लो, और यहाँ पे V प्राइमरी बना लो. ओके, सो ओके, कंफ्यूजन इसकी वजह से हो रहा है. आई गॉट इट. हाँ, मुझे भी ध्यान नहीं रहा. V इसको लिख देते हैं और V इन यहाँ पे लिखते हैं. नाउ इट विल बी ओके. सो V इन is equal to Vs. Now it is okay. You are absolutely right. V in मुझे यहाँ नहीं लिखना चाहिए था, वो गलत जा रहा है वो चीज. ओके. ओके, ठीक है, क्लियर. Okay, so coming back to this, so this V in is, again I am talking about the voltage across the secondary winding. So Vs is given by V in, that is equal to Vm sin omega t. Omega is the angular frequency. The formula of omega is 2 pi f, and f is inverse of time period. So t is the time period. So आयुष दिखा तो रहा नहीं है आयुष यहाँ पे कहीं. यस आयुष. सर जो आपने अभी ग्राफ बनाया था यहाँ पे, तो रियल डायोड में ये बीच वाला कौन सा है जिसमें आपने फ्लैट दिखाया है, फिर उसके बाद कर्व है इधर रियल डायोड में? ये यस सर. ये जो दो पॉइंट है, दिस पॉइंट and this point, this is the negative half cycle. तो यहाँ तो डायोड ऑफ ही रहेगा, तो वोल्टेज जीरो ही मिलना है. इसके अलावा ये जो तो हाँ ये स्टार्टिंग हो रहा है. हाँ, तो ये V in वापस VK से नीचे भी तो जाएगा ना यहाँ पे. दिस इज VK, ये एक मैंने एक बाउंड्री बनाया है. यस सर, यस सर. तो V in इंक्रीज करेगा, Vm तक जाएगा, फिर डिक्रीज होगा, यहाँ पर VK तक आया तो VK से नीचे भी तो जाएगा, तो डायोड फिर से ऑफ हो जाएगा. इतनी पोर्शन ऑफ पॉजिटिव साइकिल के लिए डायोड फिर ऑफ हो जाएगा. इतने के लिए पहले ऑफ था, फिर ऑन हो गया, फिर इतने के लिए फिर हमें आउटपुट वोल्टेज जीरो मिलेगा. सर ऑफ इसलिए हो रहा है ना कि अल्टरनेटिंग करंट है, एक बारी प्लस हो रहा है तो एक बारी माइनस हो रहा है. नहीं, लाइक फर्स्ट अल्टरनेटिव करंट है तो ऑफ इसलिए हो रहा है क्योंकि वोल्टेज आपका पहले जीरो था, जीरो से VK पे राइज हुआ, VK से Vm पे राइज हुआ, तो इतने पोर्शन के लिए तो वो ऑफ रहेगा क्योंकि उसका नी वोल्टेज ही रीच नहीं हुआ है. ठीक है, और फिर वापस डिक्रीज होना चालू हुआ, तो फिर VK पे आएगा, डिक्रीज होते होते स्टेप बाय स्टेप डिक्रीज होगा, जो भी फ्रीक्वेंसी होगी इसके अकॉर्डिंग, तो वापस VK पे आएगा. तो यहाँ तक तो डायोड ऑन रहेगा, इस रीजन में तो डायोड ऑन रहेगा. इसके बाद जैसे VK से कम होने लगेगा तो डायोड फिर से ऑफ हो जाएगा, तो VK से लेके जीरो तक फिर डायोड ऑफ हो जाएगा.
तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी डायोड जो ये येलो लाइन बनाया है सिर्फ इतने टाइम के लिए ऑन रहेगा। और अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से आती है तो आप ये टी ऑन टाइम ये भी निकाल सकते हो। वीएम साइन ओमेगा टी दिया है और वीके की वैल्यू पता है। इफ वीएम साइन ओमेगा टी इज गिवन, यू इक्वेट दैट इक्वल टू वीके, तो वीके बाय वीएम और इनवर्स लेके आप उसका ये टाइम भी निकाल सकते हो आप। तो सर वो ऑफ तो इसलिए हो रहा है ना फिर, मतलब क्योंकि वो रिवर्स बायस में हो जाता है फिर वो। हाँ, रिवर्स बायस में हो जाता है, बिल्कुल। रिवर्स बायस क्या है? हाँ, रिवर्स बायस में हो जाता है। नहीं, रियल डायोड दो केस में ऑफ होता है। एक मिनट, एक चीज और आपस से समझ लो। अगर ये आपका रियल डायोड है यस सर। तो ये तो आपका हो गया पॉजिटिव बायस, ठीक है, ये आपका हो गया पॉजिटिव बायस, यस सर। VF फॉरवर्ड बायस। बट दिस VF शुड बी ग्रेटर देन VK। अगर ये कंडीशन है तो डायोड ऑन है, अदरवाइज if this is the condition, if VF is less than equal to VK, your diode is off। तो भला ही ये फॉरवर्ड बायस में है but diode is not on because this condition is not satisfied। ओके सर। तो ये वाला जो केस है यहाँ पे, ये वाला केस है VF is less than VK, ये जो मैंने यहाँ पे ये जो दो पोर्शन है। यस सर, यस सर। ठीक है, और फिर वो दूसरा तो प्योरली रिवर्स बायस में हो गया, इस तरह से माइनस प्लस, प्योरली रिवर्स बायस में हो गया। ठीक है, ओके सर। ठीक है, कोई डाउट है और तो पूछ लो, फिर आगे डेरिवेशन पे चलते हैं। इसमें और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। राघव, ओके, यस राघव। सर जैसे रियल डायोड में अभी फॉरवर्ड बायस में आपने बताया था कि डायोड पहले नी वोल्टेज अटेन करेगा और फिर वो यहाँ पे ऑफ रहेगी, आउटपुट में वोल्टेज नहीं आएगी। पर वो कम आएगी ना, जीरो तो नहीं होगी पूरी आउटपुट में? हाँ, मतलब जैसे नैनो वोल्ट ऐसे कुछ आएगी, लेकिन जीरो तो नहीं होगी ना पूरी। थ्योरेटिकली अगर हम बात करें तो जीरो होगी, क्योंकि डायोड को हम ओपन सर्किट मान रहे हैं थ्योरेटिकली। बाकी अच्छा। आपका कहना सही है, वो इतनी कम होगी कि हम उसको मेजर नहीं कर सकते। डायोड ओपन सर्किट तो नहीं होता, कुछ बहुत माइन्यूट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है, बट वो मेजरेबल, इग्नोरेबल होता है। 10⁻⁻18 -15 को क्या आप कंसीडर करोगे? तो वो डिजिटल आप प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें आ रहा था। हाँ, करेक्ट, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बट 10⁻⁻15 अगर मैं आपको कहूँ कि आपको मैं मतलब 10⁻⁻3 पैसे देता हूँ तो क्या कर लोगे? इतने में कुछ नहीं खरीद सकते। तो वही बात है, क्या कर लेंगे उसमें? तो हम जीरो ही ले लेते हैं उसको। ओके, यस प्रद्युमन। सर जो आपने रियल डायोड वाला केस बनाया है उसमें जब तक वो वीके को पहुंचती वोल्टेज तब तक वो जीरो रहेगा ना? कहो वी आउट जीरो रहेगा, वी आउट। तो सर इसके नीचे वाला जो ग्राफ बनाया आपने, ये वीडी है, वोल्टेज ड्रॉप है। अच्छा, वोल्टेज ड्रॉप है, ओके। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस डायोड है ये। तो ओके, अगर वी आउट पे जीरो जा रहा है तो वी इन तो इंक्रीज हो रहा है, तो ये वी इन रोक कौन रहा है अपने अक्रॉस? ऑब्वियसली डायोड ही अपने अक्रॉस रोक रहा है। देखो इस कर्व पे भी आप केवीएल लगा लो, दिस वीएस इज इक्वल टू वी आउट प्लस वीडी, यहीं पे केवीएल लग सकता है। ठीक है, केवीएल ये मैथमेटिकल है तो ग्राफिकली भी लगा सकते हो, इसलिए मैंने उसको एक ही लाइन पे बनाया है। तो ये हमारे पास ये वोल्टेज है, ये एक पहला वोल्टेज जो हम इनपुट दे रहे हैं, और ये शेयर होगा हमारे वी आउट और वीडी के बीच में। ठीक है, ये तो हमारा इनपुट है, और वी आउट है, एक वी आउट अपने अक्रॉस कुछ ड्रॉप करवाएगा, कुछ वीडी करवाएगा। तो यहाँ लगा के देख लो, जब डायोड के अक्रॉस प्योरली जीरो है तो पूरा का पूरा वी इन वी आउट के अक्रॉस आ रहा है, और जब वी आउट के अक्रॉस पूरा जीरो है तो ये डायोड के अक्रॉस जा रहा है। तो केवीएल यहीं पे सेटिस्फाई हो रहा है, और यहाँ पे भी लगा के देख लो, वी आउट जीरो है तो वी इन कहाँ जा रहा है? डायोड के अक्रॉस। फिर ये Vm माइनस वीके है, ये प्लस वीके है, तो Vm माइनस वीके प्लस वीके गिव्स यू Vm, दैट इज अगेन इनपुट वोल्टेज। तो केवीएल यहीं पे लग रहा है। ठीक है, यस सर। ओके, सो डेरिवेशन कंप्लीट करते हैं हमारा। यस, हो जाएगा, वी हैव टाइम।
So we define average value. Okay, इस तरह का wave है मेरे पास, मतलब you can imagine like you are driving a vehicle. So sometimes this is the curve of your speed. Okay, so now if this was the distance, let's say you have traveled 10 kilometer, and every time you are changing your speed. So what will be your average speed? That is defined by velocity, total distance upon total time. Okay, so this is your average value of speed, that we called it as velocity. So in the similar manner, the magnitude of this voltage, output voltage, is constantly changing. So we define a term similar to this velocity, and that is known as average value, average DC value. Okay, because ultimately we want to convert this will be further processed and that will be converted to a DC value. So we define a term average DC value. How much DC component does it have? So that is simply given by VDC. Okay, average, it is an average. So for periodic wave, we consider only one time period. Okay, so one time period, we will take average of one time period. So that is given by integration 0 to t V out dt divided by 0 to t dt. So that is the simple definition of average, the quantity and time average. Okay, now talking about V out for one time period. Okay, for one time period, V out, you can see that V out is equal to Vm sin omega t for 0 to t by 2. So V out is equal to Vm sin omega t for t less than equal to t by 2, greater than equal to 0, and it is 0 for t by 2 to t. Yes, Gurkirat? सर ये नीचे डिवाइड में dt की इंटीग्रेशन क्यों की? और डायरेक्ट टी भी लिख सकता था मैं उसको, डायरेक्ट टी आना है, वो एवरेज निकाल रहे हो ना आप, तो ये तो मैग्नीट्यूड है और ये टाइम एक्सिस है, तो टाइम एवरेज टोटल डिस्टेंस this will give you total distance and this will give you total time. ओके सर. ओके, क्योंकि देखो इसका हर टाइम पे वैल्यू अलग अलग है, तो इंटीग्रेशन मींस मतलब दिस इज एरिया अंडर दिस कर्व. इंटीग्रेशन विल गिव मी एरिया अंडर दिस कर्व, ये तो आपको पता होगा. ठीक है, कोई कर्व का इंटीग्रेशन करते हैं और उसका एवरेज निकालना है, तो जो एक्स एक्सिस है उससे आपको डिवाइड करना होता है. Yes sir, got that. ठीक. So substituting the same value for V out, so 0 to t by t, I have Vm sin omega t dt plus t by 2 to t, the value is 0, divided by t. So it can be simply written as t. Okay, just for the feel that this is the original formula. You could have directly written t, no problem. Okay, so integration of this Vm is constant, Vm is taken out, t is again constant, t is taken out. So integration of sin omega d is minus cos omega d. So minus cos omega t, limit is 0 to t by 2. And omega is this thing, 2 pi f. So substituting omega equal to 2 pi f, so I have Vm divided by 2 pi f, that into t. Okay, in bracket I have minus cos, again writing omega as 2 pi f, and f is equal to 1 by t. So omega is 2 pi by t. So minus of cos 2 pi by t, putting the limit dot t by 2 minus of minus cos 0. Okay, this is minus. So this will be minus of minus 1, and this is plus 1. So that is going to give you 2. So this 2 will be cancelled by this 2. Okay, this f is 1 by t, so this f is cancelled by this t. So we are left with Vm by pi. So VDC is given by simple formula Vm by pi, where Vm is this maximum value, Vm of input voltage. Okay, if transformer is being used, this Vm will be the maximum value of this secondary winding. Again repeating. So VDC is given by a very simple formula, that is Vm by pi, simple. Okay, now for real diode, VDC is simply replaced by Vm minus Vk by pi. That's it. Everything is, Vm is always subtracted by Vk. So VDC is given by Vm minus Vk by pi. Second thing is that average
AC value. Okay, this is a AC wave. Obviously, it is a AC wave. So we have calculated the DC value, but it also contain AC component. So that component average value of this AC component is given by root mean square of output voltage, and root mean square VRMS is defined. This is the standard formula for calculating RMS. Okay, under root, whole thing will be under root 0 to T for one time period. Now square of the quantity that we are calculating. So V out square dt divided by again the time. So we have taken square and then we are taking root. So root mean square. Okay, Google it why we do this. Why there is a need to calculate root mean square? Why cannot we directly calculate the average value? इसका क्या होगा देखना, साइन वेव का एवरेज वैल्यू निकालोगे एक टाइम पीरियड के लिए तो क्या आएगा देखना, 0 आएगा. ठीक है, और इस वजह से हमें रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ता है. स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है, और फिर उसका अंडर रूट ले लो. दिस इज द फंडा. तो हमारे घर पे जो आता है वो 230 वोल्ट, वो वी आरएमएस आता है. दैट इज वी आरएमएस वैल्यू, दिस काइंड, समथिंग ऑफ दिस काइंड. Okay, so this is a bit complex integration. Now again substituting the value of V out. So between 0 to T by 2, I have V out square dt, and from T by 2 to T, I have 0. And this will be 0. The denominator will be equal to T. So I have to solve this thing, V out square dt between 0 to T by 2. And this V out can be written as Vm square sin square omega t dt divided by t, the integration from 0 to T by 2. Now here I can use one formula, one identity. Sin square theta is 1 minus cos 2 theta by 2. So substituting sin square omega t with this identity, so 1 minus cos 2 omega t divided by 2 dt, and this Vm can be taken outside the root, so Vm square can be taken outside the root, so I have Vm divided by root of t. Okay, now opening the bracket, so I have this, again this 2 can be taken outside the bracket, so I have Vm by root 2 root t. Yes, Chirag. Sir, sir, these all these notes and derivations have PPTs also. You have these PPTs for these derivations also and notes. Notes, so this notes will be available to you in half an hour. This exactly the PDF of this will be uploaded onto this. Like all the PDFs are there in LMS? Yes, all the thing I have taught till now are on LMS है मेरे Google Drive पे, but वो आप उसको LMS चाहो LMS से उसको कर लो, या आप ऐसे भी लिंक लोड कर लो, वो बहुत बार फ्लोट हो चुका है. सो ये लेक्चर मतलब ये लेक्चर वीडियोस है ना, नोट्स भी है इसके? दोनों चीजें. नोट्स भी है? अच्छा, नोट्स भी. हाँ, तो मतलब अभी अगर कॉपी करने की जरूरत भी नहीं वैसे फिर? हाँ, नहीं कोई जरूरत नहीं है, आप बाद में उसको कर सकते हो. अभी बस मैं ये डेरिवेशन खत्म करके आपको दिखा देता हूँ वो नोट्स कहाँ है. एक बार फिर मैं दिखा देता हूँ. ठीक है. Okay, so this opening this bracket, I have 0 to T by 2 dt, and the second term is sin 2 omega t 2 omega. So this will be 0. Okay, I believe that you have done integration of this kind of expression many times. So this will be 0. You can verify this. So we will have Vm by root 2 dot 1 by root 2. This will be T by 2. So this will be T by 2. So Vm by root 2. And because of this, we have root T by 2. And this should be, sorry, T. So root T and root T get cancelled, and root 2 into root 2 will give you 2. So VRMS will be Vm by 2, simply. Okay, so every value can be calculated. If you know the maximum value Vm, you can easily calculate VDC, and you can easily calculate VRMS. Okay, this derivation was for your reference. If in some numerical the things are asked, just you have to apply Vm by 2, that's it. So this is the value of VRMS. Next thing defined is efficiency. Okay, some input is given, we are receiving output, so we calculate efficiency. Like we fill our vehicle with some petrol, so we calculate the efficiency, in how much liter, how much kilometer we can travel. So that kind of efficiency is required. So we defined rectification efficiency. So it is the ratio of DC output power to the AC input power.
So DC output power is simple, given by a simple formula, I square DC dot RL, where IDC is given by Ohm's law, VDC by RL. VDC is nothing but Vm by pi. We have all just now calculated VDC, so Vm by pi RL, and Vm by RL can be written as Im by pi. Im का graph बनाया था, so Im by pi. Similarly, PAC is given by I square RMS dot RL, where RL is the external resistance, and IRMS is given by VRMS by RL. VRMS can be written, just now we have calculated VRMS is equal to Vm by 2, and Vm by RL, this thing can be written as Im, so Im by 2. So putting this value into this formula and taking the ratio, so efficiency eta is given by PDC by PAC into 100 in terms of percentage. So Im square dot RL for PDC divided by pi square, so this is your DC value. Im square by 4 into RL, this is your AC value, into 100 will give you 40.6%. So efficiency is 40.6%. Okay, so if you are providing 100 watt of input power, the efficiency will be only 40.6. Remaining 60% is lost. Okay, lost because some amount will be lost in the resistance, some will lost around the windings, and the entire one half is not present, so that's why. Okay, so this is the case. This is the case when we have considered that resistance of diode and secondary winding is 0. Okay, but in reality, diode will have some resistance and secondary winding will also have some resistance. So let us assume that the resistance of diode is RF, secondary coil is resistance of secondary coil is RS. So in that case, power AC will be defined by I square RMS, RL plus RF plus RS. Okay, that will be the AC power. That can be written as Im by 2 whole square into RL plus RF plus RS. Simply put this into the formula. So you will have 40.6% divided by 1 plus RF plus RS by RL if you rearrange the equation. And again, considering that if your external resistance is very much greater than RS plus RF, then again this term is going to be very close to 0. So in that case, again the efficiency will be turned out to be 40.6%. Okay, so you the similar kind of derivation we will be doing for full wave rectifier. This power efficiency, AC value, RMS value, and DC value. This kind of thing we will be doing it as the similar thing we will be doing for full wave rectifier. And one more thing is there. Here it is. I think it is not the ripple factor. So we will take it. We will start ripple factor from the next class onward. Okay, so again I will show you that how can you access the link. Okay, please अब एक बार देख लेना, मैं बहुत बार दिखा चुका हूँ. So LMS पे आप लॉगिन कर सकते हैं. And so I am logging into my LMS account and this is UEC001. So scroll down here, you can see there will be one link. This is classroom prerequisite. This is live recorded lectures and PPTs and PDF of MEE group. So if you click on this, that will take you to my Google Drive. Okay, here you have live recorded lectures. So we have around 10 lectures. This was the yesterday's lecture. And this is the half wave rectifier PDF file. This was the content previous to half wave rectifier, a load line, series parallel lectures. This was the first slide, introductory slide, and the related topics. And this I will upload this also. ठीक है, तो इतना टाइम तो नहीं है, वन बाय वन में एक पार्टिसिपेंट के डाउट ले लेता हूँ, बाकी नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे. यस कनन.
आर्यन? वो दिखा नहीं हो रहा। अच्छा सर, आपका वो दिखाई नहीं दे रहा था स्क्रीन सर। ओके ओके, सॉरी प्लीज। अब दिख रहा है? हाँ जी सर। सो ये है LMS के फ्रंट पेज पे ही लिंक है, लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स एंड PPTs एंड PDF फॉर MEE ग्रुप। तो हमारे क्लास में जो भी चलता है विद इन हाफ एन आवर यहाँ पे अपलोड हो जाता है। तो ये लाइव लेक्चर है, टोटल 10 लेक्चर्स है। तो ये कल वाला लेक्चर जैसे मैंने आधे घंटे में अपलोड कर दिया था, आज जैसे भी खत्म होगा तो वो भी मैं अपलोड कर लूंगा। दैट विल बी लेक्चर नंबर 11 एंड ऑल द नोट्स आर हियर। बाहर क्यों आ गया? So PPT and XPS फाइल। सो हाफ वेव रेक्टिफायर कल जो स्टार्ट किया था, डेरिवेशन यहाँ पर है। अभी जो पढ़ाया वो भी मैं अपडेट कर दूंगा। दिस वाज द अपडेटेड लेक्चर, इनिशियल वन ऑफ द इनिशियल लेक्चर, PN जंक्शन डायोड एंड ऑल द रिलेटेड थिंग्स, लोड लाइन एंड सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, एंड दिस इज स्लाइड 1। वी हैव स्टार्टेड विद स्लाइड 1। ठीक है, सो एवरीथिंग इज विद इन हाफ एन आवर, सब अपडेट हो जाता है। प्लीज फॉलो दिस लिंक। Okay, so see you on Friday. बाकी कोई डाउट हो तो हम वहां से स्टार्ट करेंगे, डाउट लेके फिर आगे डिराइव करेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ेंगे। So have a nice day. See you on Friday. थैंक यू सर।